Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Pad Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Microwave Engineering. Dear students, in the last video lecture, I gave you the brief introduction of transmission line. We have also discussed about what is the concept of mode. So basically mode is nothing but it is the field pattern of wave. Then we have discussed about different types of mode that exist in transmission line and waveguide. So basically four types of modes that can exist. One is the TM, transverse electromagnetic. So TM mode is basically observed in two conductor transmission line or multi-conductor transmission line. We have also discussed TM modes. So T stands for transverse electric, TM stands for transverse magnetic, and these two modes exist in single conductor transmission line like waveguide. We have also discussed about the hybrid modes. That is, hybrid modes are basically linear combination of transverse electric and transverse magnetic. And this type of modes are generally observed in open conductor transmission system. Now today we will do the mathematical analysis of transmission line. So basically transmission line is used to transmit the power from one point to another point. मतलब ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पावर और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए यूज होता है. And we have the several types of transmission line as shown in figure. तो आप फिगर में देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के ट्रांसमिशन लाइन है. फर्स्ट इज द कोएक्सियल केबल. सो बेसिकली कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ concentric cylinders conductor in form of the concentric cylinders. So this is the inner conductor, this is the outer conductor, and if we apply the electrical energy between these two conductors, then the transmission line will get energized and electrical energy will flow through this transmission line. And here there exists a dielectric material between two conductors, so there is a good isolation between two conductors, hence there is a low EMI in this coaxial cable, low electromagnetic interference in coaxial cable. So this line has good isolation, and because of the good isolation there is a low EMI. उसका EMI बहुत ही कम है, electromagnetic interference बहुत ही कम है. So the advantage of the coaxial cable. Now in figure B you can see this is the two parallel wire transmission line. So if I apply the energy between two parallel conductor, then this transmission line will get energized and electric power will flow through this transmission line. Third is the microstrip line. In figure C, this is a microstrip line. So basically microstrip line consists of dielectric slab, and this dielectric slab having a ground plane on one side, it has ground plane on one side and thin metallic strip on another side. Okay, and if I apply the electrical energy between this metallic strip and this plane, one of the end of this plane, dielectric slab, then electrical energy will flow through this transmission line. Fourth is the unbalanced line. So you can see here there is a single conductor and there is a ground plane, and if I apply the energy between this conductor and ground plane, then electrical energy will flow through this unbalanced line. There also exists the balanced line if there are two conductors which are symmetric around this ground, then it is known as a balanced line. यहाँ पे एक ही कंडक्टर है, अगर दो कंडक्टर होते and which is symmetric around this ground, then this is known as a balanced line. We will discuss about this in detail about the microstrip line and strip lines. Okay, but today we will focus on the two wire transmission line, and we will do the mathematical analysis of this two wire transmission line. Now before starting the mathematical analysis of transmission line,
let's look at the concept of transit time effects. Let's understand the concept of transit time effect. तो ये transit time effect क्या है? So to understand this transit time effect, let's consider this figure. So in this figure you can see we have two wire transmission line, and at one end, which is denoted by A dash, this is A, this is A dash, we have applied this voltage V of t. At another end of the transmission line, that is the BB dash, we have connected load. Now consider the length of the transmission line is small l. The length of this transmission line is small l, and as we know, no signal can travel through this transmission line with infinite velocity. कोई भी सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन से इनफाइनाइट वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं करेगा. सो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉइंट पे वोल्टेज एंड करंट में चेंज होता है, कोई भी पॉइंट पे वोल्टेज एंड करंट में चेंज होता है. सो सेम इफेक्ट कुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड एट द अनदर लोकेशन बिकॉज इट टेक्स फाइनाइट टाइम. वॉट एवर चेंज अकर एट वन पॉइंट, इट विल टेक फाइनाइट टाइम टू रीच एट द अनदर पॉइंट. सपोज मान लो कि यहाँ पे ए डैश पे अभी वोल्टेज है वीपी. वोल्टेज कितना है? वीपी. वीपी मतलब पीक वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज. सपोज मैंने ये वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया है, वो साइनोसोइडल वोल्टेज है. जो यहाँ पे अप्लाई किया है वो साइनोसोइडल वोल्टेज है. तो ये वोल्टेज जो मैंने अप्लाई किया है, तो सपोज मान लो कि ये टाइम वेरिंग सिग्नल है, मतलब वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा. ओके, कंटिन्यूसली कोई भी पॉइंट पे उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी. तो सपोज मान लो कि कोई एक टाइम पे ये ए डैश पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू वीपी है. सो सेम वैल्यू विल नॉट बी अपीयर एट दिस पॉइंट. अगर यहाँ पे वीपी है तो यहाँ पे सपोज होगा वीक्यू. इस पॉइंट पे वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज होगा वीक्यू. बिकॉज वट एवर चेंज हैपन्स ओवर हियर विल टेक सम टाइम टू रीच द अनदर एंड. सपोज मान लो कि थोड़े टाइम के बाद ये पॉइंट पे वोल्टेज हो जाता है वीक्यू, तो ये पॉइंट पे वो वोल्टेज होगा वीपी. ओके, मतलब सेम इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व at the two location at the same time, and this is because of this delay that appears over here, that is known as a transit time effect. So there is a finite delay between the cause and effect, and this is called the transit time effect. समझ में आ गया what is transit time effect? Okay, yes or no? Okay, so as we shown in figure, we have, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे टू कंडक्टर सिस्टम है, जिसको हमने साइनोसोडल वोल्टेज से, जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, उसे हमने एनर्जाइज किया है. ओके, और दूसरे एंड पे लोड कनेक्ट किया है. सो ड्यू टू द ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, वट एवर द वोल्टेज अप्लाइड ए डैश विल नॉट बी अपियर इंस्टंटेनियसली एट द बीबी डैश. इट विल टेक द फाइनाइट टाइम, एंड दिस टाइम इज नोन एज अ ट्रांजिट टाइम. इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिट टाइम. और ये इफेक्ट को हम बोलेंगे ट्रांजिट टाइम इफेक्ट. एंड बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट टाइम इफेक्ट there is a potential difference between the two ends. यहाँ पे वोल्टेज VP है तो यहाँ पे कितना होगा? VQ. तो मतलब ये दोनों वोल्टेज अलग अलग है. So there exists a potential difference of VP minus VQ. There exists a potential difference because of the transit time. Now what is the formula of the transit time? तो सपोज ये ट्रांसमिशन लाइन जो है हमारी, उसकी लेंथ L है, और ये वोल्टेज सिग्नल जो है इट विल ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी V. सपोज v वेलोसिटी से ये लाइन पे ट्रैवल कर रहा है. देन व्हाट इज द टाइम? सो एज वी नो, टाइम इज नथिंग बट t इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? l. सो ये हो जाएगा l डिवाइडेड बाय v, एंड दिस इज नोन एज अ ट्रांजिट टाइम. सो tr, द फॉर्मूला ऑफ द ट्रांजिट टाइम, tr इज नथिंग बट tr इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय v, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द लाइन. समझ में आ गया? ट्रांजिट टाइम खबर समझ में आ गया, पता चल गया व्हाट इज द ट्रांजिट टाइम. ओके, नाउ whenever we are doing the mathematical analysis of transmission line, then we must have to consider this transit time effect. Now is there any condition when we can ignore the transit time effect? Okay, so ideally whenever we are doing the analysis of the electrical circuit, we must have to consider the transit time effect. Okay, but there also exists some condition under which we can ignore the transit time. So if the time period of the signal, that is capital T is the nothing but time period, is much larger than the transit time. अगर time period T is much larger than the transit time, then we can ignore the transit time effect.
सो अगर मेरा टाइम पीरियड टी वो ट्रांजिट टाइम से बहुत ही ज्यादा है, देन वी कैन इग्नोर द ट्रांजिट टाइम इफेक्ट. ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टीआर? टीआर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय वी. तो यहाँ पे टीआर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एल डिवाइडेड बाय वी लिखेंगे. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल टी मच मच ग्रेटर देन एल डिवाइडेड बाय वी. तो ये एल डिवाइडेड बाय वी हो गया. और वी को हम टी मतलब क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम? टी इज इक्वल टू 1 over f. टी इज इक्वल टू 1 over f. So instead of t we can write 1 over f. 1 over f is much greater than l divided by v. अगर मैं v को इस साइड ले लूं तो क्या हो जाएगा? v divided by f is equal to much greater than l. Now what is v divided by f? v divided by f is nothing but it is the wavelength. Okay, जो हमारा नॉर्मल फिजिक्स हम जानते हैं. What is the relation between frequency, velocity and wavelength? That is v is equal to lambda f. v is equal to lambda f. तो v by f क्या हो जाएगा? v by f is equal to लैम्बडा हो जाएगा. तो इसकी जगह पे v बाय f की जगह पे हम क्या लिखेंगे? लैम्बडा. सो लैम्बडा जब जो भी सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन से, उसकी वेवलेंथ अगर लेंथ ऑफ द लाइन से बहुत ही ज्यादा है, देन वी कैन इग्नोर द ट्रांजिट टाइम इफेक्ट. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, देन वी मस्ट हैव टू कंसीडर द ट्रांजिट टाइम इफेक्ट. सो ट्रांजिट टाइम इफेक्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट when length of the line becomes comparable to the wavelength. Otherwise we can ignore the transit time effect. तो जब भी frequency of operation increase होता है, जब भी frequency increase होती है, so when the frequency is increase, what will happen? Wavelength will reduce. अगर wavelength will reduce, then transit time effect becomes more and more important. We cannot ignore the transit time effect in that case. तो जब भी higher frequency पे ट्रांसमिशन लाइन पे हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, देन वेवलेंथ बहुत ही कम होगी. और वेवलेंथ कम होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, देन वी मस्ट हैव टू कंसीडर द ट्रांजिट टाइम इफेक्ट. और एट द हाई फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिट टाइम इफेक्ट बिकम्स मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट. समझ में आ गया? ओके, नाउ next is the concept of distributed circuit elements. Distributed circuit elements. So due to the transit time effect, we cannot apply the low frequency circuit analysis concept at the to the transmission line. So because of the transit time effect at high frequency, the Kirchhoff's law, Kirchhoff voltage and current law cannot be applied to the circuit at a whole. Okay, so हमें पता है कि अगर हमें लो फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का एनालिसिस करना है तो हम क्या यूज करते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ. बट हाई फ्रीक्वेंसी पे जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रांसमिशन करेंगे तो उस पर ट्रांजिट टाइम इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी. वी मस्ट हैव टू कंसीडर द ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ टू द ट्रांसमिशन लाइन. बट इफ वी take very small section of the transmission line, that is let's say delta x, if I take the very small section of the transmission line, so in that case the length will be very less compared to the wavelength. Okay, and in that case we can neglect the transit time effect, and if the transit time effect can be neglected, then we can easily apply the Kirchhoff's law, okay, for analysis purpose. तो हम क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द होल ट्रांसमिशन लाइन फॉर एनालिसिस, वी विल कंसिडर द वेरी स्मॉल सेक्शन और शॉर्ट सेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेट्स से लेंथ डेल्टा एक्स. सो अगर मैं वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर करूंगा, सो इन दैट केस दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड एट एनी आर्बिट्ररी हाई फ्रीक्वेंसी, देयर इज लैम्डा मच ग्रेटर देन एल, एंड इन दैट केस ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देन वी कैन निग्लेक्ट द ट्रांजिट टाइम इफेक्ट एंड Kirchhoff's law can be applied. Okay, समझ में आ गया? So due to that transit time effect, the line parameters cannot be assumed to be located at a particular location. Okay, and this parameter of the line will be considered as a distributed along the line length of the line, and they are known as a distributed parameters of the line. तो लाइन के कौन कौन से पैरामीटर है वो आपको समझाता हूं मैं. सपोज मान लो कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है, और ये ट्रांसमिशन लाइन को मैंने वोल्टेज अप्लाई किया. क्या अप्लाई किया? वोल्टेज अप्लाई किया. बिकॉज ऑफ द एसी वोल्टेज करंट विल स्टार्ट टू फ्लो. यहाँ पे करंट फ्लो होगा, एंड एज वी नो फ्रॉम अवर नॉर्मल
our physics, basic knowledge of the physics, if the current is flowing through the conductor, then it will produce the magnetic field. क्या produce करेगा? Magnetic field. तो यहाँ पे करंट यहाँ पे भी फ्लो रहा है, ये कंडक्टर में भी करंट फ्लो होगा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. सो दिस मैग्नेटिक फील्ड अकाउंट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस. तो यहाँ पे ये लाइन में इंडक्टेंस होगा, एक पैरामीटर कौन सा होगा? इंडक्टेंस. सो मैग्नेटिक फील्ड अकाउंट्स फॉर द इंडक्टेंस. तो यहाँ मैं यहाँ पे इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करूंगी, ये सब इंडक्टेंस है. दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो कंडक्टर है एंड बोथ द कंडक्टर आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. Okay, and this will form the structure like capacitor. Okay, and it will show the capacitive effect. So because of this parallel structure and there is some distance between these two structure, we have the capacitive effect, and I will represent that capacitive effect by capacitance. Okay, so we have the inductance, one parameter, another parameter is the capacitance, and these two parameters cannot be assumed to be located at particular point in space, and these parameters are distributed throughout the length. As you can see, these are distributed throughout the length. Okay, and these parameters are known as a distributed parameters of the line. So whenever we are doing the analysis of the transmission line at high frequency, then if we have to consider the transit time effect, then we cannot consider the parameter as a to be located as single point. It means that we will not consider the parameter as a lumped parameter, we will consider the parameter as a distributed parameter of the line. Now with addition to this inductance and capacitance, we have two more parameters. That is, one parameter is that resistance of the line, because यहाँ पे जो भी कंडक्टर है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, because we are not considering the ideal situation. Non ideally the line has some resistance, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होगा. सो सीरीज में कौन कौन से पैरामीटर आ गए? इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस. नाउ देयर इज अ वन मीडियम एग्जिस्ट बिटवीन द टू कंडक्टर्स. सो वी हैव टू कंडक्टर्स, और ये कंडक्टर के बीच में कोई मीडियम है, ये मीडियम है, एंड दिस मीडियम इज ऑल्सो नॉन आइडियल, एंड बिकॉज ऑफ दैट वट एवर द करंट फ्लोइंग ओवर हियर will be leakage through this medium into second line. So there is a leakage current flowing between these two lines, and because of this leakage current we have the conductance between these two lines. So with capacitor we have also conductance. So this conductance is represented over, this is the conductance, this is the conductance that is denoted by Z, capacitance which is denoted by C. Okay, resistance, this is the resistance R, and we have the inductance L. So in presence of transit time effect, we have whatever parameters line, these are known as a line parameters, transmission line parameters. Which are the transmission line parameters? Four parameters are there. One is the resistance, another is the inductance, capacitance and conductance. So in presence of transit time effect, all these parameters are considered as a distributed in nature. We cannot consider the all this effect of all this parameter to be located at the single point. It means that these parameters are not considered as a lumped circuit elements. We must have to consider them as a distributed circuit elements, and these distributed parameters can be defined per unit length of the line. It will be defined per unit length of the line. And if I define the resistance, so resistance is nothing but R is equal to series resistance per unit length for both the conductors, and what is the unit? It is defined per unit length. Resistance is defined per unit length. So for this transmission line, this resistance is defined per unit length. So R is the resistance per unit length, so unit will be ohm per meter. Okay, inductance is also defined per unit length for both the conductors. What is the unit of inductance? That is Henry. So that is Henry per meter. Conductance, that is due to the leakage current between these two conductors. So conductance also defined for the unit length, and it is connected in shunt. So this is known as a shunt conductance per unit length. What is the unit of conductance? The unit of conductance is mho. So that is the mho per meter or Siemens per meter. Another unit will be Siemens per meter. And last, there is a capacitance. So capacitance is the shunt capacitance per unit length, and what is the unit of capacitance? That is the Faraday per meter. So whenever we are
defining the parameters of transmission line at high frequency, then we must have to consider the transit time effect, and all these parameters are considered to be distributed parameters, and these are known as the line parameters, transmission line parameters, or primary constants of the transmission line. These are also known as the primary constants of the transmission line. So डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट्स का कंसेप्ट पता चल गया। तो ये दो जो ट्रांसमिशन लाइन हमने जो यहाँ पे कंसीडर की है, तो उसमें दो कंडक्टर है ट्रांसमिशन लाइन में, उसके कौन कौन से पैरामीटर है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस। और जब भी ट्रांजिट टाइम इफेक्ट होती है तब ये जितने भी पैरामीटर है उसको हम लंप्ड सर्किट एलिमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। वी मस्ट हैव टू कंसीडर दिस पैरामीटर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर length of the transmission line, and they are known as a distributed circuit elements, and they are defined per unit length. Okay, true. Now if you would like to at arbitrary high frequency, let's say at arbitrary high frequency, any high frequency, if you would like to ignore the effect of transmission line, then what is the condition? So as we derive the condition that wavelength must be much greater than L, but at high frequency the wavelength should be very less, so this condition will not be satisfied and we must have to transit time effect. Now is there any other option? So other option is that if we consider very small section of transmission line, in that case L will be very small, L बहुत ही कम होगा, और अगर L बहुत ही छोटा होगा compared to the wavelength, then we can ignore the transit time effect. So for analysis of the transmission line, if you would like to apply the Kirchhoff's voltage law and current law for the voltage and current analysis, then we must have to consider the very small section of transmission line. So if I consider the very small section of the transmission line, then in that case the transit time effect can be ignored. Transit time effect can be ignored, and if the transit time effect can be ignored, then I can consider the elements as a lumped element. So to represent the transmission line parameter as a lumped elements model of the transmission line, I will consider the very small section of the transmission line. So let me consider the very small section of the transmission line. This is the very small section of the transmission line. Let's say this is the very small section of the transmission line whose length is delta x. इसकी लेंथ डेल्टा एक्स है, बहुत ही छोटा पार्ट, कंसिडर अ वेरी शॉर्ट सेक्शन. सो इन दिस सेक्शन वी हैव द पैरामीटर दैट इज R, L, C and G. Okay, this is a very small short section of the transmission line, and now the value of the inductance, capacitor, resistance will not be R, L, G and C, but it should be R into delta x, R into delta, L into delta x, C into delta x and G into delta x, because जो भी वैल्यू हमने R है वो पर यूनिट लेंथ है. तो अगर पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस R है तो डेल्टा x लेंथ में रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R इंटू डेल्टा एक्स. सिमिलरली L इज द इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो डेल्टा x लेंथ में इंडक्टेंस कितना होगा, तो L इंटू डेल्टा एक्स. सिमिलरली कैपेसिटेंस इज पर यूनिट लेंथ, तो डेल्टा x लेंथ में कैपेसिटर कितना होगा, तो C इंटू डेल्टा एक्स. And inductance is also defined, conductance is also defined per unit length. So delta x section में conductance कितना होगा, तो G into delta x. So if I consider very small section of length delta x, okay, then this parameter value become L into delta x, R into delta x, G into delta x and C into delta x. Then if I consider the very small section of the transmission line, then this condition will be valid, and if this condition will be valid, then we can ignore the transit time effect, and if we ignore the transit time effect, then we can consider this model as a lumped element. These elements of the transmission line considered as a lumped element, okay, because in the presence of transit time effect we have to consider the parameter as a distributed, but in the absence of transit time effect we can consider the parameter as a lumped element. And if there is a lumped element model of the transmission line, we can apply Kirchhoff's voltage law and current law for the analysis of the transmission line. And this lumped element model is valid at all frequency. Okay, समझ में आ गया. So if you consider very high frequency, then this model is valid, because at high frequency this condition will be true, because we have considered the very small section, so L is very small. So in that case this condition is satisfied, and we have the lumped element model of the transmission line. And if we have the lumped element of the transmission line, we can apply the Kirchhoff's voltage law and current law for the analysis purpose. समझ में आ गया. Okay,
सो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस अबाउट द concept of transit time, when to ignore the transit time, what are the distributed elements of the transmission line, and when we can represent the lumped element model of the transmission line. Now in next lecture we will do the mathematical analysis of the transmission line considering this lumped element model. ये lumped element model consider करके किरचॉफ वोल्टेज एंड करंट लॉ अप्लाई करके हम ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस करेंगे. वी विल find the voltage and current on the transmission line. So I hope कि आज हमने जो भी डिस्कशन किया आपको समझ में आ गया होगा. Let's stop here. We will discuss other aspect of this chapter in our next video lecture. Thank you very much.